हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक वीकली राउंड अप किया था बट समहाउ कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके लिए हमने अपने बैकएंड पे बहुत कोशिश भी करी बट समहाउ वो वीकली राउंड अप हम आपके पास नहीं पहुंचा पाए। और अब फाइनली इस वीक का वीकली राउंड अप हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और दो वीक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा क्योंकि 15th ऑफ अगस्त जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करी। बट लुकिंग एट टुडेज मूवमेंट वापस ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और जब भी कंफ्यूजन होता है तो हम जाते हैं एक के पास। गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. How are you? I was happy. I was happy till Mhm. yesterday, but Mhm. today somehow I am unable to understand what went wrong. Rachit. Uh, okay, I'll tell you. So, purely putting things into perspective, we everybody knows that this week's movement was largely due to the announcements on GST and reforms, if I may say so, GST reforms that everybody is calling them. Why a Friday saw some of the profit booking is, in my opinion, that we had taken an exaggerated sort of a upside uh, from this news flow. Okay. Okay, this is a positive news flow, no doubt about it. Okay, uh, but we closed last week at about 24,600 and something, 630 if I'm not mistaken. And while we were not able to put out the last week's video out on YouTube, but if you remember, I had pointed out that we have a trend, 5 or 6 week trend of lower high and lower low, जिसमें से लोअर हाई वाला ट्रेंड ब्रेक हो गया था लास्ट वीक. Hmm. So last to last week ka high and this week ka high, sorry, last week ka high was higher, but the lower low trend continued Right. in place. Okay, so I even told you, Rachit, that 3 day long weekend है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया announcement आता है, तो it can be, you know, the market is at such a cusp that 300 400 points up and 300 400 points down is not ruled out, is Hmm. what my verdict was for this coming week. So cut to Friday, छुट्टी थी, Friday को ये सारे announcements आए, markets should have absorbed it and reacted a little more sensibly. But what we saw on Monday was kind of a bizarre kind of a thing. इतना बड़ा हाँ. गैप और फिर वो गैप अप मेंटेन करना, चलिए ठीक है, एक बार के लिए even the most suspicious or those kind of people will also think कि चलो ठीक है, maybe there is some genuine you know good news that has taken the market so much up and all that. But I kept I'm sure a lot of other people also in the market, I kept thinking and thinking about कि इसमें पूरा इकोनॉमी और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट ऊपर जाने की क्या जरूरत है, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि 24,600 से सीधा 25,100 तक, 25,150 तक, इनफैक्ट इस वीक का हाई 25,147 और कुछ ऐसा है. तो दिस इज अ मैसिव मूवमेंट. We are talking about what? We are talking about 550 points movement upside. तो अक्रॉस द बोर्ड इतनी रैली होने का क्या रीजन है? अब आप ये जीएसटी अनाउंसमेंट्स देखिए. See, we were at 5%, 12%, 18%, and 28%. Correct? Okay. The government wants to get rid of 28% and 12% slab. Fair enough. 12% पे सबसे कम चीजें थी. ओके, मैं बोलता हूँ आप 80% चीजें भी मान लो कि 12% वाली 5% हो जाती है. करेक्ट. रही बात 18% की, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज वर टैक्स रेट 18%. तो 70-75% चीजें उस पे है, तो उस पे कोई चेंज नहीं है.
वो पार्ट अभी भी कांस्टेंट है. A small bit of 12% items are moved to 5%, become sasta, right? 28% was considered to be as the luxury level GST, correct? 28% में दो चीजें हैं largely speaking. सस्ती गाड़ियां, by सस्ती I mean non-luxury segment. I'm not talking about the likes of Mercedes or BMW. I'm talking about the likes of Marutis and Tata Motors and Mahindras, right? इन पे जो टैक्स है, इन पे टैक्स 28 का 18 होगा. बाकी चीजों पे, मतलब ऑल अदर आइटम्स विच वर लग्जरी or high GST item, whether you take cigarettes, whether you take five-star hotel stays, whether you stay five-star restaurants, all those things, and luxury cars, they are bumped up to 40% as a sin tax. तो अब मतलब आई हैव नॉट गॉट इनटू द निटी-ग्रिटीज, टेकिंग इनटू अकाउंट कि कितना वॉल्यूम इस लेवल पे टैक्स होता है, ये शिफ्ट होगा तो कितना होगा. बट प्योरली बाय लुकिंग एट दिस सिनेरियो, रचित, एक चीज बोल सकते हैं कि इसमें नेट नेट एक्सचेकर को फायदा है. कलेक्शन विल इंक्रीज ऑन दिस, जीएसटी कलेक्शन विल इंक्रीज ऑन दिस, एक्सचेकर को फायदा है. No, but they're saying no, 40% may they will not transfer all the 28% to 40%. There is a probability that 28% से 18% पे भी migration होगा. Only luxury and sim would be transferred to 40%. I agree, So the but remaining, which was there on 28%, will come down to 18%, ना? बट रचित 28% पे क्या क्या था पहले? इलेक्ट्रॉनिक्स थे, गाड़ियां थी, द लाइक्स ऑफ 5-star होटल्स, और उसमें लाइक इफ यू गो टू अ 5-star होटल, देयर इज सर्टेन ग्रेड ऑफ, मतलब आई थिंक इट इज मेजर्ड इन व्हाट इज द एवरेज रेट पर रूम पर नाइट. आई थिंक वो Rack rate of the room, according to that, it was decided. करेक्ट, वो 7500 या 10,000 रुपीज का कोई एक वो ब्रैकेट है जिसके ऊपर वो उस टैक्स ब्रैकेट में चला जाता है. तो आज के दिन अगर आप कहीं पे भी 8-10 हजार रुपए से ऊपर के रूम में रहते हैं, अगर उस होटल में खाते हैं और कुछ भी करते हैं, वो सब चीज पे 28% जीएसटी. करेक्ट. ऑल दिस इज कंसिडर्ड लग्जरी और सिन. सिन मान लीजिए आप ये सिगरेट्स, टोबैको, alcohol. Alcohol तो चलिए, alcohol is not in GST. Let's take alcohol out of the equation. Okay, but ये सब में majority items 40 पे जा रहे हैं. और जो गिने थी, I can understand that this massive consumerism पे जो बूस्ट करने की बात हो रही है, जीएसटी कम हो रहा है और कंज्यूमरिज्म बूस्ट होगा, वो किस पे होगा? गाड़ियों पे होगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे होगा. And to an extent, FMCG. एफएमसीजी का रचित, अगर आप देखें कौन सा आइटम एफएमसीजी का जो है, जो 28 पे था, जो 18 पे हो रहा है, मतलब यस, देयर मस्ट बी सम फ्यू एफएमसीजी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल्स, जो एक ह्यूमन एसेंशियल्स है, वो सब तो 5% या 0% पे था. अगर हम FMCG will not be impacted. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लार्ज impactful impact. I'm talking about impact, मतलब negligible टाइप का impact होगा. जब आप वैसे भी लोअर टैक्स ब्रैकेट पे हैं, तो आपके ना तो डिमांड पे इतना फर्क पड़ेगा, वो तो जो डिमांड है वो है. उस टैक्स ब्रैकेट में इलास्टिसिटी भी बहुत कम हो जाती है फिर. एग्जैक्टली. वो 5% का टैक्स ब्रैकेट है. अब 5% के टैक्स ब्रैकेट में आप क्या ही ऊपर क्या ही नीचे हो जाएगा, वो तो जो है वो रहेगा. ठीक है. फर्क पड़ेगा रचित, मैं बताता हूँ फर्क किस पे पड़ेगा. फर्क गाड़ियों पे पड़ेगा, ऑटोमोबाइल्स पे. सो वी आर लुकिंग एट, इफ यू सी द मूवमेंट इन मारुति, इन टाटा मोटर्स, इन महिंद्रा दिस वीक, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, या मतलब सब अक्रॉस द बोर्ड, दे हैव टेकन इनटू अकाउंट. ओके. अगेन फर्क पड़ेगा किस पे? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे.
we're talking about fridge, air conditions, laptops, computers, 28 to 18%. I agree. इन सब सेक्शन में कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा. इसमें भी एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ. आई विल कम टू इट. ओके, सी द लग्जरी सेगमेंट, अगेन दैट बिकम्स, बिकॉज वो जो इंडिया में जो सेगमेंट वैसा खरीदता है, वो भी थोड़ा, उसमें भी इलास्टिसिटी कम है. Hmm. Because somebody who is buying a Mercedes is not going to, delay his purchase, or put off his purchase अगर 28 का 40% टैक्स हो गया. So again, we are And in not. majority of the cases, the taxi carriers and other people any which way will be getting input of the particular payments that they're making. So it doesn't really impact them that much. एग्जैक्टली. सो इसका जो नेट इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमरिज्म, it is good, positive, but very, very product specific, if I may say so. Okay, net impact on exchequer, it is positive क्योंकि collection ज़्यादा होगी, definitely. Okay, अब आप इसे रिफॉर्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये एक पर्सपेक्टिव Time है. will tell. तो ये टाइम विल टेल नहीं, ये पर्सपेक्टिव है, ये अपना अपना नजरिया है, बोल सकते हैं आप कि इज दिस रियली अ रिफॉर्म, is this a is this a reform which warrants a 600 point movement on Nifty and staying there? अगर आपका आंसर डाउटफुल है या ना है, तो आपको फ्राइडे के मूवमेंट का आंसर पता चल जाएगा. Why we have fizzled out on the rally? Okay. So after the entire elaborated explanation of what has happened on the 15th of August and this week, how do you see the markets behaving in the coming week then? Acha, I would like to add one more thing, Rachit. Sorry for interruption. Really, They that's have announced. perfectly fine. This discussion They, is very interesting, and I believe the viewers who will watch this, they will get to know what exactly was hiding behind the bush. right, right. So अब typically देखिए कि ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मैक्सिमम सेल्स फेस्टिव टाइम में होती है ना. फ्रिज, टीवी, गाड़ी, दिवाली, दशहरा, वो ऑस्पिशियस मूवमेंट, ऑस्पिशियस डेज होते हैं, तो वो होती है. अब इन्होंने अनाउंस करके व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव सेड दैट दिस इज एप्लीकेबल आफ्टर अक्टूबर, व्हिच इज आफ्टर दिवाली. सो I don't know how this will pan out for their festive sale. मतलब, if I am a consumer who is ready to pick up a product during Diwali or Dhanteras, I Merry, will postpone my decision. I will postpone my decision when I clearly know that the GST is falling. I am not Makes saying sense. that this is not good for the company. See, their Q3 balance sheet will actually see the impact of increase in sales, no doubt about it. But जो festive sales वो करने वाले थे, मेरे को लगता है कि टू एन एक्सटेंट थोड़ा डैम्पनेस उसमें आ जाएगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अवेयर दैट प्राइसेस कम होने वाले हैं, दे विल ट्राई टू पोस्टपोन देयर परचेजेस. Got it. या So now where are we heading next week? फिर Rajat, again, going by the technicals, we have maintained second week, we have maintained higher high, which is a good thing. जो लोअर लो मैंने लास्ट वीक पॉइंट आउट किया था, वो लोअर लो भी ब्रेक हो चुका है. इनफैक्ट अगर आप इस वीक का लो देखें, But we had higher low this week, right? या वी हैड हायर लो. Okay. लास्ट वीक लोअर लो का जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू था. इस वीक वो भी ब्रेक हो चुका है. सो दे आर टू पैरामीटर्स व्हिच आर नाउ सजेस्टिंग दैट वी आर, वो जो 5 या 6 वीक की जो लूजिंग स्ट्रिक थी, वो निफ्टी ने ब्रेक कर दी है. दे आर टू पैरामीटर्स व्हिच आर सजेस्टिंग दैट. ओके, I am personally very happy that the Nifty has gone up and closed above 24,600 levels, because in my mind 24,600 is a time and tested crucial level, whether you cross from bottom to top or top to bottom. It acts as a barrier anyway.
तो अगर हम 24,870 में आज क्लोजिंग है निफ्टी की, सो वी आर लुकिंग एट, अगर डाउनसाइड कोई न्यूज आती भी है तो वी आर नॉट लुकिंग एट मोर देन 200 पॉइंट्स डाउनसाइड, Got 200 it. एंड ऑन द अपसाइड जो इस वीक का हाई बनाया है 24,150 के आसपास, मुझे वो रेंज लगती है। मतलब नेक्स्ट वीक आई विल नॉट बी, आई विल, आई थिंक आई विल बी pretty comfortable playing in the range of 24,600 and 24,150, or sorry, 25,150, or maybe even 25,000 for that matter. uh, ये Acha, 400 पॉइंट, we are not सॉरी, seeing 25 to 50 in the coming week. no, I don't think so. I don't think so. We'll need some solid good news, some more fresh good news. We'll see. We'll have to see for markets to push beyond that level. Uh, there are a whole lot of there are a whole lot of things that are coming up, no doubt about it. But they are mostly sector specific. In fact, if you remember offline, we were discussing about the telecom sector, and you know how they are all increasing prices now, Geo and Airtel. Where Uh, ARPUs will go up, and there is this new news which is making some rounds in the market, wherein the AGR dues of Idea might be written off by the government and then followed by Bharti. If they uh, have to write off of Idea, right, eventually they will have to do the same with Bharti. So that might right. be giving a good boost to telecom. But then we don't see any upside heading towards 25 to 50. So are we like again entering into a short range market for the coming week? Rachit, I'll tell you, in my opinion, breakouts out of range are going to happen only when we start seeing real better economic figures and real better corporate figures. So अभी हम अगस्त में बैठे हैं, हम we are in the middle of the quarter. There is no sign of any corporate results for the next month or so, at least month and a half, maybe 6 weeks, right? So वो एंगल गया। अब हम genuinely agar we are seeing good economic figures, we are saying inflation, we are talking GDP, we are talking GST collection and the likes, if we genuinely see that the economic conditions are improving, we this range is going to keep moving up. ये जो मैंने अभी आपको 400-500 पॉइंट की रेंज दी है, अगर ये स्ट्रेंथ दिखाती है तो मे बी नेक्स्ट वीक वी मूव अप 200 पॉइंट ऑन दिस रेंज, 200 300 200 करके धीरे 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 हम अप जाएंगे, no doubt about it. But immediate term, to say something that 25 150, which is seemingly a solid resistance level, we have something to break past that? No, as of now, no. तो मैं इसलिए नेक्स्ट वीक का ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि 25 150 के ऊपर दिखा देगा। पहले ऑल्सो अगर 25,000 के पास बंद होता, 25,000 के ऊपर बंद होता, तो मैं फिर भी एक आई वुड हैव एडवाइज दैट पीपल कैन टेक चांसेस ऑन दैट, बट वी आर कंसिडरेबली लोअर देन 25,000, वी आर एटलीस्ट वी आर 130 पॉइंट्स लोअर देन 25,000, so we have almost 300 points to cover before we hit the resistance level, and then we'll need some rocket fuel to go up, ahead of that resistance level. So Chaliye, got it. I was we are expecting. asking a lot. We are asking a lot for for the kind of news that we have right now, or a known whatever is known in the known space. We are just asking a lot for 25 to 50. But very frankly, after what we saw this week, after so many weeks, that there was some sense of happiness. And as they say, retail ka dil to bachcha hai ji. And that was the reason I was expecting that you will say 25 to 50 plus can be a possibility. But the way you have been, because, and that is the reason I continuously questioned you twice as thrice, that there might be something that you might be missing out on, which is evident and it's clear that that's not the story. So, chaliye, as always, it was amazing talking, and the range that we have got for the next week is 24,600 to 25,100 to the max. Probably Nifty has to move in that particular range because, as we have seen in the past. But as always, it was amazing talking and learning as to where the markets are heading.
and we'll catch up the next week and discuss further as to how the Sure. things have panned out in the week and what we will see in the next week. As always, it was amazing talking, and Sure. have a happy weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Happy weekend. Bye.